Hello everyone. Today in this video, we will learn about the topic of the HRM of potential appraisal. So let's start the video to giving my introductions. So my name is Vikas Man. My name is Vikas, and I am from Evening College of Delhi University. And today the presentations of the human resource management famous quote जो famous quote का मतलब ये है कि किसी को पर्सन को उसके ऊपरी जस्ट स्ट्रक्चर से उसे जज नहीं किया जा सकता है उसके अंदर क्या पोटेंशियल है। सो ये उसके अंदर पोटेंशियल उसका खुद ही पता चलता है कि वो कितना अंदर कैपेबल है और कितना वो कुछ कर सकता है, किस चीज़ में उसका स्किल है। तो पोटेंशियल कोड वो आप अंत वीडियो में याद रखिएगा, आपको हेल्प करेगा। So what is the potential appraisal? Potential appraisal is the help to organizing to identify करता है capabilities को, उसके hidden talents को and potentials को और their employees को। And ये जो potential appraisal है ये help करता है organizations को prepare करने के लिए employees के higher further responsibility ले सके and उसके इनमें जो पोटेंशियल है उसको ज़्यादा वर्क कर सकता है। तो पोटेंशियल एक प्रकार का फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस भी होता है क्योंकि डे टू डे लाइक उसके स्किल के पोटेंशियल से वो डेवलप होते रहता है, इसलिए वो फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस है। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड we will go about the methods of potential appraisal. So first method is like self appraisal. So self appraisal in the manager is जो मैनेजर होता है वो एम्प्लॉय को उसके सेल्फ अप्रेजल करता है, वो उसको बताता है। सेकंड इज लाइक पीयर अप्रेजल एंड द ग्रुप ऑफ द पर्संस जो होते हैं वो मिलकर पर्संस को अप्रेज करते हैं, उसे पीयर अप्रेज करते हैं। एंड थर्ड इज लाइक सुपीरियर अप्रेजल। सुपीरियर अप्रेजल में मेनली ये होता है कि जो हायर पोजीशन पे जो पर्सन होते हैं इन द फॉर्म या बिजनेस में, वो लोअर पोजीशन ऑफ द या उससे सबऑर्डिनेट्स को वो अप्रेज करते हैं कि हाउ टू वर्क एंड हाउ टू लाइक ग्रोथ फास्टली एंड दैट। एंड थर्डली लीडरशिप एक्सरसाइज। एंड लीडरशिप एक्सरसाइज में मेनली जो लीडर्स होता है वो अपने रूल रेगुलेशंस के अनुसार वो लीडरशिप जो होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को लीड करते हैं कि कैसे वो मोटिवेट रहे और अदर थिंग्स। दैट्स व्हाई द बिजनेस का जो ऑर्गेनाइजेशंस का बिजनेस है वो फास्टली ग्रो करे। एंड सेकंड फाइव like methods of like psychological test। जो हेड होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज के साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, वो किस चीज़ में उसका टैलेंट है छिपा हुआ, किस चीज़ का उसका पोटेंशियल है। एंड दैट्स लाइक उसका मन नहीं लगता तो वो जिस चीज़ में उसका पोटेंशियल है उसको वर्क उससे दिया जाता है, इसे साइकोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं। एंड सिक्स इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट में यूज करके मेनली लाइक ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है कि मैनेजर किस किस रोल मॉडल्स या किस किस वर्क पे वो मैनेज कर सकता है, इसका ऑब्जेक्टिव बनाता है। सो इट इज लाइक मैथ्स हैं जो पोटेंशियल अप्रेजल में होने में उसे मदद करते हैं। नेक्स्ट लाइक बेनिफिट ऑफ द पोटेंशियल अप्रेजल। बेनिफिट्स हैं लाइक इवैल्यूएशन ऑफ कैपेबिलिटीज। जो कैपेबिलिटीज होते हैं उसे इवैल्यूएट करते हैं। सेकंड इज सक्सेस प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग। और जो प्लानिंग होते हैं वो सक्सेशंस कहलाते हैं, जो भी चीज़ में सक्सेशन प्लानिंग है वो कहलाते हैं। थर्ड इज लाइक करियर डेवलपमेंट। करियर डेवलपमेंट में मेनली लाइक डेवलप किया जाता है उसे टूल्स लाइक कैरियर में वो डेवलपमेंट दिया जाता है, जैसे वो अपना डेवलप कर सके, अपना गोल को फास्टली अचीव कर सके और जो सीनियर द्वारा दिया गया वर्क को। एंड फोर्थ इज लाइक मोटिवेट एम्प्लॉय। पोटेंशियल बेस हेल्प करता है कि मोटिवेट एम्प्लॉय को मोटिवेट करने में कि वो किस तरह वर्क कर सके। इसलिए लाइक आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड्स। एंड जब तो किसी को भी नीड पड़ता है ट्रेनिंग का, जिससे पोटेंशियल उसका बढ़ सके, तो वो हेल्प किया जाता है, उसे आइडेंटिफाई करके उसे ट्रेनिंग दिया जाता है कि वो अच्छे से और एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली वर्क कर सके। एंड सिस्टम इज मीट द ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड वो ऑर्गेनाइजेशन जो गोल है उसे फास्टली कंप्लीट कर सके। And the last slides in the like potential appraisal process. The first process like role descriptions का देखा जाता है। सेकंड में लाइक उसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्वालिटीज क्या क्या रिक्वायर है उसमें। एंड थर्ड इन लाइक फाइंड द इंडिकेटर ऑफ क्वालिटीज, तो फाइंड किया जाता है कौन सी क्वालिटी उसमें है और नहीं है। एंड फोर्थ इज लाइक ऑर्गेनाइजिंग द सिस्टम, सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसका फीडबैक लिया जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड